तुकाराम ने विठ्ठल भजो राधे गोविंदा। तुकाराम ने विठ्ठल भजो राधे गोविंदा। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंद। श्री राम जय राम। Yeah.
Welcome to our Sunday morning service. And if you're joining us, please enjoy our presentation for this morning. I know this weekly satsang is broadcast, and many people throughout different cities of the world, they do join with us and they do enjoy it. So if you have some time, just sit by your altar or you can do your work and join us in this morning prayer. Akandamandalakaram Vyaptam yena characharam Tatpadam darashitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurudeva Maheshwara, Gurudeva Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Guru Sakshat Parabrahma. Tasmai Shri Gurave Namaha. 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 Dhyanamoolam Gurur Murti Dhyanamoolam Gurumurti. Poojamulam Guru Pada Poojamulam Gurupadam. Mantramulam Gurur Vakyam Mantramulam Gururvakyam. Mantramulam Gurur Vakyam Mantramulam Guruvyakyam. Mokshamulam Guru Kripa Mokshamulam Guru Kripa. Mokshamulam Guru Kripa. At the conclusion of this first two shloka, it tells us that Tasmai Shri Gurave Namaha. The Shri there does not refer to Lakshmi alone or any other aspect of the Lord. It says Shri represents Brahma Vidya. Brahma Vidya is knowledge of the self, and it is only through the kripa of our Guru we can able to experience this in our life. In the month of May, we celebrated Mother's Day. In 2 weeks' time, we will be celebrating Father's Day, and that comes in June. And in July, there is Guru Purnima.
this shows us that what we practice or what we believe in from the Vedas, Matridevo Bhava, Pitridevo Bhava, Achara Devo Bhava. The two were created in the Western world, but it shows that how things coincide. Mother's Day, Father's Day, and then Guru Purnima. So we do the short tune and ask that, O Gurudeva, Sat Gurudeva. We ask that, O Gurudev, may you grant us in our life the opportunities that we need to acquire Brahma Vidya. Gurudeva, Sat Gurudeva, Gurudeva, Satgurudeva, Gurudeva, Sat Gurudeva, Gurudeva, Satgurudeva, Sundar Rupa, Shri Gurudeva, Sundarupa, Shri Gurudeva, Sundar Rupa, Shri Gurudeva, Sundarupa, Shri Gurudeva, Saranam Sharanam Satgurudeva, Sharanam Sharanam Satgurudeva, Gurudeva, Satgurudeva, Gurudeva, Satgurudeva, Gurudeva, Satgurudeva, Gurudeva, Satgurudeva, Sundar Rupa, Shri Gurudeva, Sundar Rupa, Rupa, Shri Gurudeva, Sundar Rupa, Shri Gurudeva, Sundarupa, Shri Gurudeva, Sharanam Sharanam Sadgurudeva, Sharanam Sharanam Shri Gurudeva, Gurudeva, Sharanam Deva, Gurudeva, Sharanam Deva, Gurudeva Tumhari Jai Jai Ho, Gurudev तुम्हारी जय जय हो, Shiv Shankar Tumhari Jai Jai Ho, शिव शंकर तुम्हारी जय जय हो, Gaura Parvati Tumhari Jai Jai Ho, महापार्वती तुम्हारी जय जय हो, Gurudev Tumhari Jai Jai Ho, गुरुदेव तुम्हारी Jai जय Jai जय Ho, हो, Gurudev Tumhari Jai Jai Ho, Tasmai Shri Gurave Namaha. तस्मै श्री गुरुवे नमः, Tasmai Shri Gurave Namaha. तस्मै श्री गुरुवे नमः, Tasmai Shri Gurave Namaha. तस्मै श्री गुरुवे नमः, Om Bhurabhuvasva ॐ भूर्भुवः स्वः,
तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो नः धियो यो नः प्रचोदयात्। So now we go into our usual Mangala Charan, prayers to Bhagavan Sri Ram. After that, we'll do one kirtan, one chaupai, and then we'll continue our sermon for this morning. Lokabhiramam Ranarangadhiram Rajivanetram Raghuvansanatham Karunyarupam Karunakarantam Shri Ramachandram Sharanam Prapade. सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। सीताराम
Shyam. Sita Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram, Radhe Shyam Shyam Shyam. Sita Ram Ram Ram, Radhe Shyam Shyam O Shyam. Sita Ram Ram Ram, Radhe Shyam Shyam Shyam. Ram Ram Sita Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram. O Sita Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram, Radhe Shyam Shyam Shyam. Ram 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 Sita Ram Ram Ram, Ram 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 Sita Ram Ram Ram. Sita Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram, Sita Ram Ram Ram. गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है. गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है. श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है. श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है. श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है. ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है. गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है. ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है. श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है. ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है. गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है. गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है. लाल मेरो है. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि. बरनव रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारि. बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार. Why do we do these prayers? God has given us all the equipments in our life to use them for our advantages on the spiritual part and also on the material side of life. We have the Shakti, the desire to do it. We have the power to do it. And we also have the wisdom to do it. Iksha Shakti, Kriya Shakti, Jnana Shakti, it's there. So it is like having equipments in your home. And you're aware of it, but you want to continue the way you've been doing it. The modern way helps you to get it done faster. Or even in your offices that we have, we're accustomed to do addition with our, we count, we do 10 and 10, 20. Today you have the calculator. So sometimes we lose sight that there's support for us. You have a dictionary. You are not fully aware of the meaning of a word, and then you're bothering yourself. I think bhakti means devotion, bhakti means faith, whatever. You go to the dictionary, it helps you. The tools are there. So in order for us to be conscious of these tools that we have, we must do prayer. Prayer is a reminder to us that we are not a limited being, but we are Purana.
We have all the equipments in life, but we do not use them. But when we use them, life becomes easier for us. Things happen, and we are able to manage it. This is why we do all these long prayers, and sometimes we do it at home, but when we come here, we do these prayers so that we can get that understanding. It can rejuvenate us in life, that we understand that we are not limited, but we are Purna. But to know this, it is only the prayers that we do helps us. Mangala Bhavana Amangala Hari. मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदसरत अजिर बिहारी. द्रवहु सदसरत अचिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी. मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई. जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई. जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नागी. कृपा करो गुरु देव की नाई मंगल भवन अमंगल हारी. मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई. जय 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 हनुमान
सबके प्रिय सबके हितकारी सबके प्रिय सबके हितकारी जागत सोवत शरण तिहारी जागत सोवत शरण तिहारी श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय रामा. The true devotee of God sees the hands of the Lord everywhere. His hands is there to protect us wherever, whenever we call upon Him. And that chaupai is taken from Ayodhya Kand, where Bhagwan Sri Ram was told by Valmiki, Sabake Priya, Sabake Hitakari. Once a Mahatma met a lady, and she said that you are preaching that the Lord is everywhere and He's everything, and I'm so unhappy. How this can be true? So the Mahatma Ji said, you have a child in your hand. I want you to let loose of this child. Let this child fall down. Then I will answer your question. So the lady, she said, what a cruel man is this? How can he be a Mahatma telling me that this child of mine, because I have problem, I must lose the child? So the Mahatma said to her, similarly with God, the Lord never allows His child or His children to fall. The very love that you demonstrate for this child, that you don't want this child to fall, that love is given to you by God, and He is telling you that I will never allow you to fall. Under all circumstances, I will be there. I'll be able to protect you in your life. So the Chaupai said that we read tells us, and in this bhajan, a very old bhajan that we used to sing in Guyana, that the Lord can be found anywhere. Mehlon mein nahi, kutiyon mein nahi. महलों में नहीं कुटियों में नहीं पर जहाँ याद करो भगवान वही. That the Lord is not in the head. Don't feel that because you live in a palace that the Lord will come to your rescue. कुटियों में नहीं, even in a kuti, a hut, पर जहाँ याद करो, the Lord, whenever you remember Him, under all circumstances, remember this bhajan that Baba sang so many times, जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में हो तू, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन हो तू. So this bhajan we'll sing this, महलों में नहीं, गंगा में नहीं, जमुना में नहीं, महलों में नहीं, कुटियों में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही. It is a simple one. गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, महलों में नहीं, कुटियों में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही. जहाँ याद करो भगवान वही. महलों में नहीं, कुटियों में
मंतर में लगी, जंतर में लगी, मंतर में लगी, हीरे में लगी, मोती में लगी, जहाँ याद करो भगवान वही, जहाँ याद करो भगवान वही। ओ महलों में लगी, गंगा में लगी, यमुना में लगी, महलों में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वही, ओ जहाँ याद करो भगवान वही। This bhajan takes us to the line that I've read by this Mahatma. A true devotee of the Lord understands that his hands is always there for them. Whether it is difficult time, whether it is happy time, the Lord is there. And in the Chaupai of the Ramayana, we'll repeat the Chaupai now. I hope we will be in the Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama, Shri Ram Jai Ram Jaya Jaya Rama. Oh, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Rama, सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, जागत सोवत चरण तुम्हारी, जागत सोवत चरण तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। Hear the Chaupai saying, सबके प्रिय सबके हितकारी. These are the lakshan, the qualities of a bhakta, a devotee. All of us in our life, our aspiration is to be a devotee of the Lord. Because we believe if we are devoted to God, there's an extra support for us in life. You belong to a group. In our life, day-to-day life, we have our social group, we have political group that we are affiliated to, we have different seniors group, juniors group, but the greatest of association, true devotion, is to be associated with the Lord. And one of the prerequisite to this is sabake priya. Try to love as much as you can. As the Mahatma told the lady, the Lord loves the love that you have for your child. It is the Lord who gives you that. So sabake priya, sabake hitakari. Try to be helpful. Try to be kind as much as you can to your fellow being. Jagat, when you wake up in the morning and when you retire at night. So what? You remember the Lord. You know the story. This is like a refresher. You may have heard the story 999 times. But this will make it completed today. From so many preachers. Naraji went to Vaikunt. And when he went to Vaikunt, he said, Lord,
Hey Vaikuntavasi, I am your greatest bhakta because I never stop chanting your name. So the Lord said, Naraji, I want you to go down on earth, go back to earth, and you will see a kutia there, and there lived a farmer. And I want you to monitor his movement and come back to me. So Naraji went. He says, why I have to take all this trouble to go to earth again? I'm in the abode of the Lord, and he did not acknowledge that I am his greatest devotee. Remember one thing in life. The Lord, whatever he does in life, is to save the man or to save the honor of his bhaktas. And not only in this case, in the case of the Ramayana, when Narad asked him, he says, I want, you heard this katha a couple of weeks ago, that Lord, I want you to give me the form of Vishnu. I want to have your form, that I will able to win the hand of Vishwamohini. The Lord said to him, I will give you that form that is beneficial to you. So Naraji came down, and he saw this gentleman. The morning time, he said the name of the Lord. Midday, as he was working, before he had his lunch, he called the name of God. And when he concluded his day's work, he placed his axe on the ground, and he said, Narayan. So that is 3 times, right? Tri Sandhya Mukti Gehini. Our Dharma tells us, people ask, other religion, you pray 5 times, 12 times. Wherever you are, you have to be allowed to pray, whether you're in a steamer or a plane. Our Dharma says, Trisandhya Mukti Gehini. The Trisandhya means the 3 times. However you can do it. If you do it, it helps you to have freedom. So Naraji came back. He says, Lord, you told me to look at the farmer. And what I observed in the morning, he called your name. Lunchtime, he called your name. And when he retired from work, he called your name. He says, okay, Narad, we'll find the truth of the story. He says, I want to give you this bowl, a katora filled with oil, and I would like you to go back and walk the same distance that the farmer walked. But the condition, not a drop of oil must spill from this bowl. So Narad went there. He says, the Lord's hukum, the order of the Lord is, I must adhere. So he went, he walked the entire village, went back to Vishnu Bhagwan. He said, Lord, look at it, not a drop of oil followed. So Bhagwan said to Naraji, during the course of this journey that you had, how many times did you remember to call my name? Because you call my name all the time. If I'm sleeping, you call me. Narayan, Narayan. So Naraji said, Lord, my focus was on what you told me, not to allow the oil to drop. So he says, Narad, how can you compare yourself as my greatest devotee when the farmer going through his day's work on a hot sunny day, remember me thrice, and you are saying that you're my greatest devotee. Narad was great, but when our prayers allow us to feel that we are superior to others, the Lord, he pressed the brakes. You are his devotee, but he don't want you to be carried away by false pride. He says, Narad, 3 times, as opposed to you did not remember. So the end of the japa says, Jagat Sovat Sharana Tumhari. When we understand this, then we will come to the conclusion of the Mahatma, that the guiding hands of the Lord under all circumstances is there for us. Bhagavan was the charioteer of Arjuna. He went in the battlefield and he guided Arjuna because he was his bhakta. And so many other incidents we have with the Lord.
लघुता से प्रभुता बढ़े, प्रभुता से प्रभु दूर। हीर मिश्री खाती है, हस्ती पाकत दूर। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, राम राम। लघुता से प्रभुता बढ़े, प्रभुता से प्रभु दूर। हीरी मिश्री खाती है, हस्ती पाकत दूर। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, राम राम, बोलो बोलो राम। यद्यपि सर्वज्ञ है, भगवान is सर्वज्ञ, he is the indweller of all being, व्यापक गगन समान, he prevails the entire universe, पर निज भक्तों के लिए, for those who are aspiring to be his devotee, or you are, छोटा है भगवान, that Lord that is all powerful. It is not Lord. You have an electric fan, and it has its case, it has its way, it spins. But that fan, unless the current goes there, it will not work. So we are like the fan without the current. But when Paramatma enters into our life, in whatever way he comes, whether he comes in the huge form or through our vision, we are able to see him and to understand his Maya. Although his Maya is aparampar, he's there for us. Chota hai Bhagwan. And there's so many incidents, there's so many teachings we find from all the books, Ramayana, Gita, Mahabharata, that the Lord, for his bhaktas, nothing is too much for him to do. This is why the Mahatma told that lady who had the doubt that the Lord hands never fails us wherever or whenever we like him. Remember the story of Gajendraj? So many beautiful stories. So this is our first talk for this morning. We will go to a kirtan now, and after this kirtan, we will have a two bhajan, and then I'll come back. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai, गोविंद जय जय गोपाल जय जय Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. राधा रमण हरि गोविंद जय जय Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. गोविंद जय जय गोपाल जय जय Radha Ramana Hari Govinda Jai. राधा रमण हरि गोविंद जय जय
बिहारी लाल की जय। शिव बालकृष्ण लाल की जय। अंत में निकला ये परिणाम, 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 परिणाम। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। 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 अंत में निकला ये परिणाम, राम अंत से में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। सिमरो नाम रूप बिन देखे, कौंदी लगे नारा। सिमरो नाम रूप बिन देखे, कौंदी लगे नादा। नाम के बांधे, नाम के बांधे, नाम के बांधे किछे आएंगे, आखिर एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर को विनाश तू के लांग सके नारा। जिस सागर को विनाश तू के लांग सके नारा। कूद गए, कूद गए, कूद गए हनुमान उसी के, लेकर राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। वो दिल वाले क्या पाएंगे जिनमें नहीं है नाम। वो दिल वाले क्या पाएंगे जिनमें नहीं है नाम। वो पत्थर तैरेंगे कैसे जिन पर मिटा हुआ श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला
कृष्ण गोविंद गोपाल भज मन श्री राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल भज मन श्री राधे ओ श्री राधे 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 ओ राधे कृष्ण गोविंद गोपाल भज मन श्री राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल भज मन श्री राधे ओ राधे राधे बोल 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 ओ राधे कृष्ण गोविंद गोपाल भज मन श्री राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल भज मन श्री राधे राधे गोविंद गोपाल भज मन श्री राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल भज मन श्री राधे ओ राधे कृष्ण गोविंद गोपाल भज मन श्री राधे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय. We will do a few prayers to Divine Mother this morning, and we ask that, O Divine Mother, O Shakti Ma, the tool that you have given us, in that the power of creativity, the power, mental power, and all the other tools that you have endowed us with, we ask that we may use them to our advantage and not to our disadvantage. Ya Devi Sarvabhuteshu Matrirupena Samsthita Namastasyai 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 Namo Namaha. सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः.
Namastasयै, 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 Namo Namaha. There's a beautiful saying that says, seeking help is living intelligently. Very simple. Seeking help is living intelligently. This is why we pray to Ma. We seek her help. All of us need help in life in different ways. And as we surrender to her as Lakshmi, O Ma, help us through these difficult times. Ya Devi Sarvabhuteshu Lakshmi Rupena Samsthita Namastasyai, 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 Namo Namaha. दया is very important. दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान. तुलसी दया न चाहिए जब तक घट में प्राण. अम्बे माँ, अम्बे माँ, मैया महिमा अपरंपार. अम्बे माँ, अम्बे माँ, मैया महिमा अपरंपार. माँ हे माँ, हे माँ, हे माँ. दुर्गा दुर्गति दूर कर, मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आओ. ओ माँ हे माँ, हे माँ, अम्बे माँ. हे माँ, हे माँ भजन ना. बोलिए जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय. कोई जाने न जाने महामाया की माया. कोई जाने न जाने महामाया की माया. माता रानी फल दे, माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी. और कोई जाने न जाने महामाया की माया. माता रानी कर देगी माँ, आज नहीं तो कल देगी.
धनवान करे, माँ दुखियों के दुख दर्द हरे, निर्धन को धनवान करे, माँ दुखियों के दुख दर्द हरे, निर्बल को माँ बल देगी माँ। आज नहीं तो कल देगी माता रानी वर देगी माँ, आज नहीं तो कल देगी। जीवन धूप पर छाया है, जीवन धूप पर छाया है, महामाया की माया है, ओ माया की माया है। जीवन धूप पर छाया है, महामाया की माया है। जीवन धूप पर छाया है, महामाया की माया है। हर मुश्किल का हल देगी माँ आज नहीं तो कल देगी। ओ कोई जाने ना जाने ओ महामाया की माया, जाने ना जाने महामाया की माया। माता रानी बल देगी माँ। आज नहीं तो कल देगी। तू संकट से ना घबरा, तू संकट से ना घबरा, ये सब खेल है 2 दिन का, ये सब खेल है 2 दिन का। तू संकट से ना घबरा, ये सब खेल है 2 दिन का। तू संकट से ना घबरा, ये सब खेल है 2 दिन का। ये दिन भी तो बदल देगी माँ। आज नहीं तो कल देगी। ओ कोई जाने ना जाने ओ महामाया की माया, कोई जाने ना जाने ओ महामाया की माया। माता रानी फल देगी माँ। आज नहीं तो कल देगी। बोलिए जय करा माँ मैदा बोल साचे दरबार की जय। पाहि प्रभु शरणं देवा, पाहि प्रभु शरणं देवा। भोले बाबा महादेवा, भोले बाबा महादेवा, भोले बाबा महादेवा, भोले बाबा महादेवा। शंभु शंकर देवा, शंभु शंकर देवा, शंभु शंकर देवा, शंभु शंकर देवा। भोले बाबा महादेवा, भोले बाबा महादेवा, भोले बाबा महादेव, भोले बाबा महादेवा। हर हर गंगे महादेवा, हर हर गंगे महादेवा, हर हर गंगे महादेवा, हर हर गंगे महादेवा। भोले बाबा महादेवा, भोले बाबा महादेवा, भोले बाबा महादेवा, ओ भोले बाबा महादेवा। शंभु शंकर देवा, शंभु शंकर देवा, शंभु शंकर देवा, शंभु शंकर देवा। भोले बाबा
So now we will do Gita Dhyanam. This Gita Dhyanam is dedicated to the family of the late Dr. Cecil Haricharan. Last week we did for Dr. Ramsundar from Guyana, who passed away. And this morning, he passed last Tuesday. He was the godbrother of our Guruji here, Babaji. And he did human service. There were a few people at his viewing, Bano and some others who were here. He worked on the east coast of Guyana, and he worked tirelessly for those who needed real help. He was there for them. He was a people's doctor, and he lived to a ripe age of 93, and he died. We asked that Bhagavan may bless his daughters, his wife, grandchildren, and also his Jivatma may have Sadgati with this Gita Dhyanam. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दधानि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तवनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेदेन पाने ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वो उपनिषदो गावो गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्तुतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्माद्रोणा तथा जयात्रथजला गान्धारवीरोपला शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी श्रोत्रेणा खलु पाण्डवैरणनदी कैवेतका केशवाः पाराशर्यवच सरोजममलम् गीतार्थगन्धोकटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पीपीयमानं मुदा भूयत भारत पङ्कजं कलिमल प्रध्वंस्यश्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुरसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. That is the Gita Dhyanam. Now we'll do one verse of chapter 12. It is the 18th verse. And this verse would probably support our discourse this morning, where Bhagavan Sri Krishna says, Sama satrusya mitre cha tatha man apamanayo sitosmin dukha sukha dukkeshu sama sangha vivarjita. So we'll all read together as we dedicate this verse
In fact, we read this verse and we ask that, oh Lord, may we extract the meaning of it. It talks about sambhav. Sambhav means, like the lady with the baby in her hand, she feels she was suffering and there was no one there for her. Samta. Samta is a very, very important thing to have in life. It's not easy. When pain comes, we shout. When pleasure comes, there is joy and everything else in us. So, sama, shatru cha mitre cha. This is two words. If you understand it, it means that we must be alike to our foe and also to our friends. Sabake priya, sabake hitakari, jagat sovat sharana tumhari. So, comes back with our morning discourse, sabake priya, satru and mitra. Try to remember this. You go to all functions. If it's a week-long function, at some time, the Babaji will tell you that you are your own friend and also you are your own enemy. Man apaman. Man apaman means you must be prepared to accept the man in life. Honor and also dishonor. It comes to all of us. Someone say you have done well, but tomorrow you may not do as well as you did before. And they say, you know what? Pull him down. We must learn this. So I'll ask Panditji to read the verse, which we've explained. We'll all read together, and then we'll go into meditation. Gaye. Samasatru. समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः. We'll repeat it together. Everybody will read. Gaye. समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः. So this verse teaches us to become a devotee. These are the things. We must try to have a balance in life. And when the balance is there, it helps us to understand that the tools that is given to us, we are born as a human being. God has given us this body. He has given us this body. Life is a gift, but living is an art. You have children at home, you buy a piano for them. No matter what kind of genius they may be, they have to have lesson. You want to learn to play violin, you contact the gentleman here who's, you may have a violin at home. You have to go to him. And these are gurus. We started off by talking about Guru and Guru Purnima. Dholak, tabla, whatever the case may be, you want to learn the language, you have to have someone to. So life is God's gift, but living is an art. We have the art of living. Today we have an organization that is called the Art of Living, and they teach us very well. The kirtans are beautiful, and they do so much things that to enlighten us, to be reminded that we are Purna. We are not an inadequate being. We are an adequate being. So we go into meditation, dhun, and after that we'll have a bhajan to Mata, and Panditji will sing a bhajan too, and then we will do the closing part. Prabhuji, दया करो, दया करो, मन में आने बसो, आने बसो,
तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, मंत्र पूजा नहीं जानो, मैं तो केवल तुमको ही मानो, मैं तो केवल तुमको ही मानो, सारे जग में ढूंढा तुमको, सारे जग में ढूंढा तुमको, अब तो आकर बाह भरो, अब तो आकर बाह धरो, प्रभु जी प्रभु जी दया करो, दया करो, मन में आन बसो, हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम. We're going to we do 2 pranayam and we try to remember that we have divine qualities within us. And through divine qualities, we get to the divine. So we do pranayam and then we go into silent meditation. प्रभु जी मैं तो आप ही आप बुलाया, प्रभु जी मैं तो आप ही आप बुलाया, देश विदेश बहुत दिन भटका, अपने घर नहीं आया, ओ प्रभु जी मैं तो आप ही आप बुलाया, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, ॐ शान्ति ॐ, असतो मा असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मामृतं गमय, ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, ॐ शान्ति शान्ति शान्ति.
सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। You see, we start with prayers, and when we conclude with these prayers, we hope that we will get shanti, shanti, shanti. That's the most important part. We start with the Mangalacharan so that we can be rejuvenated. And when we leave here, the only prasad we want from the Lord is the one that you will not get downstairs or in a sweet shop, and that is shanti. So we pray and ask that Bhagwan will have Jagaki Rakhwale, and then Panditji will do a short bhajan, Hanuman Chalisa, then we'll close. Today the prasad is sponsored by the Mandir, so please enjoy it. जग की रखवाले करने वाले जगदम्बे मैया, जग की रखवाली करने वाले जगदम्बे मैया, महिमा तुम्हारी है निराली है जगदम्बे मैया, महिमा तुम्हारी है निराली है जगदम्बे मैया, जग की रखवाले करने वाले जगदम्बे मैया, जग की रखवाली करने वाले जगदम्बे मैया। तेरी दया से जीते हैं मैया, तेरे भरोसे चलती है नैया, तेरी दया से जीते हैं मैया, तेरे भरोसे चलती है मैया, घर घर है सुख से दीवाली जगदम्बे मैया, महिमा तुम्हारी है निराली है जगदम्बे मैया। दुखियों के घर में सुख में सारे, अन्योरे घर में दिया जला दे, दुखियों के घर में सुख बरसा दे, अन्योरे घर में दिया जला दे, सबकी मिटाने राती काली जगदम्बे मैया, महिमा तुम्हारी है निराली है जगदम्बे मैया। चरणों में बैठे आस लगाए, विनती हमारी खाली न जाए, चरणों में बैठे आश लगाए, बिनती हमारी काली न जाए, ले लो जगदम्बे मैया, ले लो ये आरती की थाली जगदम्बे मैया, तुम्हारी जगदम्बे मैया, महिमा तुम्हारी है निराली हो जगदम्बे मैया।
बोल साचे दरबार की एक छोटा सा भजन गुरुदेव If you have prasad, you can bring it and give it to Pandit ji. We'll offer it. Kashi ji, गाइए. Sri Ram 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 Sri Ram Jai Jai Ram 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 Sri Ram Jai Jai Ram Ram Sri Ram Jai Jai Ram राम राम श्री राम जय जय राम Ram Ram Sri Ram Jai Jai ओ राम राम श्री राम जय जय राम Ram Ram Sri Ram Jai Jai Ram राम राम श्री राम जय जय राम Ram Ram Sri Ram Jai Jai ओ राम राम श्री राम जय जय राम Ram Ram Sri Ram Jai Jai ओ राम राम श्री राम जय जय राम Japo Ram 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 Japo Ram 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 जपो राम 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 जपो राम 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 Bhajo Ram 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 Bhajo Ram Ram Japo Ram 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 Japo Ram 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 Bhajo Ram 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 Bhajo Ram 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 Lokabhiramam Ranrangadhiram Lokabhiramam Ranrangadhiram Rajivanetram Raghuvansanatham बोलो राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं Rajivanetram Raghuvansanatham राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं Karunyarupam Karunakarantam कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं Sri Ramachandram Saranam Prapadye Sri Ramachandram Saranam Prapadye Ram राम राम श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम Bhajo Ram 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 Bhajo Ram राम राम Bhajo Ram 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 Bhajo राम 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 Japo Ram 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 Japo Ram Japo Ram 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 जपो राम 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 Ram 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 राम 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 Jai Jai Sri Sita Pastor ji, can you bless the prasad for those who have prasad? Give it to Pandit ji, he'll bless it. Any announcement, Prabhaji? I know we know there is a 3-day. Acha. Priti Bhoj is sponsored by nobody, so when Prabhaji asked, I said nobody, but it's Vishnu Temple. The workshop on Thursday, June 9th, from 7 p.m. to 9 at Vishnu Mandir Banquet Hall. Please come and join Ramayana Katha starting on the 10th, 11th, and 12th. And this is sponsored in memory of the late Sumati Ramdayal and Dr. Ramdayal, and member of the parents of the Ramdayal family. Please come and join us every session. Ekadashi Puja will start at 5 o'clock, and that day it's Friday. Whilst the Bedi Puja will go on in here, then we will start Abhishek to Mata. Lord Vish, lots of puja that day, but please come and join. Ayurved camp, 12th of June, 10th of July,
4th of August. Our Bhagavad Katha in advance, it's on the 31st of July until the August 7th, I think. Purnima is on the 14th of June at 6 p.m. We'll do Satyanarayan Bhagwan and Sri Hanumanji Puja together. Now we'll close with Hanuman Chalisa, where we ask Pavanaputra Hanumanji anniversary, installation anniversary will be in July. We will probably next week tell you the program that we'll have for Hanumanji, our annual program for the installation of Hanuman. हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हनुमान सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हनुमान श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारे बरनो रघुबर बिमल जसो जोदायक फलचारि बुद्धिहीन जन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान जय कपीश तिहु लोक उजागर अंजलि पुत्र पवन सुत नामा कुमति निवार सुमति के संगी कानन कुंडल कुंचित केशा कांधे मूंढ जनेऊ साजे हमारे राम जी को राम राम कहियो जी ओ हनुमान हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान तेज प्रताप महाजगवंदन राम काज करिबे को आतुर राम लखन सीता मन बसिया विकट रूप धरि लंक जरावा रामचंद्र के काज समारे हमारे राम जी को राम राम कहियो जी ओ हनुमान हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान श्री रघुवीर हर शुभ लाए तुम मम प्रिया भरत सम भाई अस कई श्रीपति कंठ लगावे नारद सारद सहित अहिसा पाल जहाते कवि कोविद कर सके कहाते हमारे राम जी को राम राम कहियो जी ओ हनुमान हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान राम मिलाए राजपद दीना लंकेश्वर भई सब जग जाना लीलो ताहि मधुर फल जानो जल्दी लाग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सिखल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक खाओ को डरना हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी को राम राम कहियो जी तीनों लोक हाँकते कापे बोलो महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग
पथ निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान सारी सृष्टि की तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरही हनुमत से ही सर्व सुख रही हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान संकट कटे विजय सब मीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई जो शत बार बाण कर सोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यहाँ पर हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ है हमारे राम जी को राम राम कहियो जी ओ हनुमान हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हनुमान सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हनुमान सीता राम 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 पवन तनय संकट हरन राम राम मंगल मूरति राम 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 सीता राम राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बोल पवन सुत हनुमान की जय सीता राम 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 सीता राम राम बोलो हनुमान स्वामी की जय Sitaram, Sitaram. I want to, this morning we had a young drummer. There's supposed to be Avinash here to play, Avinash Dubey. But this is my grandson, my eldest grandson. Came all the way from Miami and he filled in because all the other drummers, some are not well, some is out of the country, and summertime, you know, is difficult. So he's here and he did a, okay. Sitaram, Sitaram. सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए मुख में हो राम नाम राम से हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ हो विधि का विधान जान हानि लाभ सही जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए जिंदगी की दौड़ सो हाथ दीन नाथ के महलों में राखे आए झोपड़ी में बास दे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कही ओ
एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। राम रस त्याग प्यारे राम रस कहिए। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। ओ राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री गोविंद भज मन श्री राधे ओ राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। हरे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे विष्णु मंदिर में राधे राधे विष्णु मंदिर में राधे 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 जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय विसर्जन विसर्जन तुम्ही विश्व करता तुम्ही विश्व ज्योति में हो प्राण भरता। तुम्ही काल के काल हो शक्तिधारी। स्वीकारो स्वयं वंदना हमारी। दया धर्म की मन में ज्योति जगाओ जीवन पंथ मेरा प्रभु जगमगाओ। भरो पाप मेरे भरो भाव भक्ति। मुझे नाथ दो अपनी तू दिव्य शक्ति। मुझे मोह माया के सागर से तारो। मुझे मोह माया के सागर से तारो। मेरे काम और क्रोध को नाथ मारो। मेरे काम और क्रोध को नाथ मारो। अहंकार मेरा हरो शक्ति दाता। अहंकार मेरा हरो शक्ति दाता। मेरा कोटि कोटि वंदन विधाता। मेरा कोटि कोटि है वंदन विधाता। नमः पार्वती पते। हरे हरे महादेव। Remember that the Guru is the one apara sansara samudra madhye. To cross this mundane world, when we recite the prayers to Guru, Tasmai Shri, that Shri there is to help us to get knowledge. Arti? ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे पल पावे दुख बिन से
हरे आवे अष्टमी कीर्तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गो मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरति कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम होई के गोचर सबकी प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति ओ किस विध मिलो दया में किस विध मिलो दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपनी हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ बार परम तेरी ओम जय जगदीश हरे बोलो तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री
महालक्ष्मी विष्णु जी भगवान की जय। महालक्ष्मी से तिरुपति बालाजी भगवान की जय। महालक्ष्मी से नरसिंह भगवान की जय। धर्म की जय जय हो। अधर्म का नाश नाश हो। प्राणियों में सद्भावना सद्भावना हो। हो विश्व का कल्याण हो हर हर महादेव।